हेलो, चलिए मैं YouTube के ऊपर आ गया अभी। चलिए YouTube पर आइए फिर अभी। म्यूट भी ओके है? ठीक है, चलिए प्लीज ज्वाइन YouTube पर ज्वाइन कीजिए। आपको आज लिंक रहेगा अपना जो लास्ट टाइम का वही था, उसको अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इज इट ओके? चलिए ज्वाइन कर रहे हैं, उधर कोई आ रहा है या नहीं? हेलो, चलिए YouTube पर ज्वाइन कीजिए। प्लीज ज्वाइन ऑन YouTube। राइट, मीटिंग व्यू कर देते, YouTube के ऊपर ज्वाइन करो और कोई YouTube का भी लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ कर दिए, चलिए ठीक है, फाइन, थैंक यू। मेरा कुछ इशू चल रहा है मोबाइल का, मुझे समझ में नहीं आ रहा, काफी देर से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आई एम लिविंग द मीट एंड नाउ वी आर मीटिंग ऑन द यूट्यूब। ओके, am I audible here? Is the screen visible? Is it okay? Okay, fine. ठीक है, thank you. So we will continue with the lecture here on YouTube. Now today we will start the portal frames, a 3-member portal frame. The questions are already shared to you. The question must be available with you. Okay, ठीक है, fine. So we will start with the questions. Take question 1. Say it is the question number 13 of our set. Is the screen clearly visible? It is A, B, C and D. This is 10 meter, it is 8 meter and this distance is 4 meter. It is subjected to UDL here and the intensity of load is 0 kilonewton per meter. Okay. So the question is, sketch the shear force diagram, the bending moment diagram
for the portal frame. This is a portal frame. Okay. इससे पहले जो हमने सॉल्व किया वो सब बीम था. All those were beams. Now this is a frame. This frame is made up of three members. AB is one member, BC is the another member, CD is the third member. It is subjected to forces. What we are having for our syllabus are the determinate frames. For our syllabus, we are having determinate portal frame. How many are the external unknowns if you will see? It is a fixed end. So how many unknowns we consider for the fixed end? How many unknowns we consider for a fixed end? Please keep answering in the chat box so that will give me a confidence कि हाँ भाई मैं जो भी आपको यहाँ बता रहा हूँ that is getting transferred to you. How many unknowns we consider for a fixed end? Fixed end के लिए हम कितने unknown consider करते हैं? For fixed end we consider three unknowns: a vertical, a horizontal, and a rotation or a couple. So this fixed end, say I am replacing by a vertical at A, a horizontal at A, and a movement at A. These are my assumed direction. मैंने इसको up assume किया, इसको right assume किया और इसको anti-clockwise assume किया. You could assume this down, this you could assume left, this you could assume clockwise also. हम कुछ भी assume कर सकते हैं. But whatever you are assuming, accordingly we have to solve. And if you get the right answers, it means that your assumptions are correct. If not, it must be in the opposite direction. That's all. हमने बीम में क्या किया था? अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्केच करने के लिए पहले हमने सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट किया था. That was our step 1. So the same thing we will do here. First we will determine the support reactions. How to determine the support reactions? There are three unknowns and we are having three conditions of equilibrium. First, it is sigma fx is equal to 0. If I am doing sigma fx is equal to 0, it means that actually I am equating the rightward forces with the leftward forces. It is a vertical force, it is a couple, these two will not be there in that sigma fx is equal to 0. This is the only horizontal force, HA. Why I have named this as VA, HA and MA? Because this is joint A. तो मैंने VA vertical at A, horizontal at A and couple at A और moment at A. ऐसे मैंने तीन unknown consider किया है. If I am doing sigma fx is equal to 0, it means that I am considering the all forces acting in the system and I am equating the rightward forces with the leftward forces. So HA is the rightward force acting. There is no other horizontal force acting except this phi. And this phi is acting in the opposite direction. So this HA is equal to phi. या नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है? HA minus phi is equal to 0. Take that phi to the other side and that will be HA is equal to 5 kilonewton like that. And this I have got positive, it means that this my assumed direction is right. Now next you do sigma Fy is equal to 0. This is VA. These two will not be there in the equation. ये horizontal नहीं रहेगा. This total UDL can be converted into a single concentrated load. The intensity is 3 and the span is 8. So that concentrated load will be equal to 24 and that is acting down. So this upward force will be equal to that downward force. नहीं तो मुझे कैसे लिखना पड़ता है? VA minus 24 is equal to 0. Take that minus 24 to the other side. Then VA will be equal to 24 like that. So I have got the value of VA also. Is it okay? Fine. कुछ दिख नहीं रहा है. अरे यार चलो ये क्या खेल है यहाँ पर यार. अच्छा भी दिख रहा है क्या? Is it visible now? Is it visible now? अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? Okay, fine. It is visible. Thank you. So
ये पोर्टल फ्रेम में first I have got the value of HA, then I have determined the value of VA. Now do sigma moment is equal to 0, and we can take moment about any point in the plane. I say taking moment about A is equal to 0. So HA and VA, they will not produce any moment because they are passing from the point A. This couple we have to consider, it is anti-clockwise MA. So what we will do, the anti-clockwise moments we will equate with the clockwise moment. या नहीं तो anti-clockwise positive, clockwise negative, positive minus negative is equal to 0. Take those negative to the other side. एक ही बात हो जाएगी. So if I am doing sigma fx 0, I am equating the rightward with the leftward forces. If I am doing sigma phi 0, I am equating the upward forces with the downward forces. If I am doing sigma moment is equal to 0 about any point in the plane, then I am doing clockwise moment with the anti-clockwise moment I am equating. This MA is anti-clockwise. Because of this UDL, see the concentrated load will be acting here. If you want to convert this into a concentrated load, A3 the 24 kilonewton it will be, and that will be acting here. So it will produce clockwise movement. So ये हमने equation ये वो side लिखना चाहिए. So must be equal to 8 multiplied 3 is the intensity of load multiplied by 8 is the span, and that will be acting at half the span. So that will get multiplied by 4 clockwise. Now what about because of this 5 kilonewton? This 5 kilonewton is acting here. See, this is the line of action of force, and this is the perpendicular distance. So this force is acting here. So it will produce anti-clockwise movement same as this MA. So it must be on the same side of that. This is 4 meter. This entire is 10 meter. So this vertical distance must be equal to 6 meter. So this distance is 6 meter. So the moment will be equal to 5 to 6 plus 5 into 6. So what is the value of MA? The moment at A. 8 3 is 24, 24 3 is 72 minus 30. So how much that will be equal to? 42 kilonewton meter. Is that right? Is it okay? अरे कैमरा ब्लिंक हो रहा है. अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Okay, fine. So the moment about A will be equal to 42 kilonewton meter. And I have got positive, so it means that whatever my assumed direction is, that is right. So the assumed direction was anti-clockwise, so it means that this is acting anti-clockwise. अगर इसमें से कोई भी आंसर निगेटिव आ गया होता तो वो डायरेक्शन में यहाँ पर करेक्ट कर देता था. Now I will write the value of VA. How much is the value of VA? That is 5. What is the value of HA is 5. The value of VA is 24 kilonewton. And the value of MA is 42 kilonewton meter. Okay, fine. So the first step is to determine the support reactions, and I have determined the support reactions. What is next now? After determining support reactions, now we have to sketch the shear force and bending moment diagram. So what we will do to sketch the shear force and bending moment diagram, first we break this portal frame into number of components. How many are the member? 3. So it will get break into the 3 components. Say this is one component, AB. The another component is BC. The third component is CD. Is it okay? Answer is 66. Which one is 66? That is not 42 you mean to say. What is the moment about A? It is MA plus 5 into 6 is equal to 3 into 8 multiplied by 4. 8 क्या 24 और 24 चौक अच्छा 96. 96 minus 30. 96 minus 30 will be 66. You are right. It is not 42. It is 66 kilonewton meter. You are right. Thank you. Thank you for correction. Thank you.
Thank you, Mr. Sayyiduddin. Okay, so now we are having the reactions available. All we have got positive, so we are continuing with the same directions. अगर कोई निगेटिव आता तो वो हम डायरेक्शन चेंज करते. अभी बिफोर स्केचिंग द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्लिटिंग दिस इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स. ए बी एक पार्ट है, बी सी दूसरा है, सी डी तीसरा है. सो वी आर ब्रेकिंग इट इनटू 3 पार्ट. जो मुझे नोन है पहले मैं वो स्केच कर दूंगा यहाँ पर. दिस इज नोन वैल्यू, दिस इज 24 किलो न्यूटन. This is a known value and this is equal to 5 kilonewton. This couple is a known value and this is equal to 66 kilonewton meter. Kilonewton, kilonewton meter, this is kilonewton. This is A. और क्या पता है मुझे? ये UDL. What is the intensity of load? 3 kilonewton per meter. और मुझे क्या पता है? एक concentrated load D पर. So there is a horizontal concentrated load at D. And that is equal to 5 kilonewton. अब क्या करेंगे? See, it is a determinate portal frame because the external unknowns are 3 only. And whatever these joints are, these are rigid joints. These are rigid joints. If it is a rigid joint, the behavior will be like a fixed joint. अगर ये rigid joint है या अगर ये फिक्स जॉइंट है, देन हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव टू कंसीडर. अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करता हूं, देन हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव टू कंसीडर? 3 रिएक्शंस वी हैव टू कंसीडर, ए हॉरिजॉन्टल, ए वर्टिकल एंड ए रोटेशन. अब आप मुझे बताइए कि हमने इनके डायरेक्शंस कैसे अज्यूम करना चाहिए. आइदर वी कैन अज्यूम इन एनी रैंडम डायरेक्शन और अदरवाइज वी कैन लॉजिकली अज्यूम करेक्ट डायरेक्शंस आल्सो. एट मेनी प्लेसेस हम अगर थोड़ा सा सोचते हैं तो हम करेक्ट डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं. कैसे? देखिए यहां पर अगर मुझे 3 रिएक्शन बताना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड रोटेशन. दिस हॉरिजॉन्टल इज एक्टिंग राइट, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग हियर, सो दिस हॉरिजॉन्टल हियर मस्ट बी एक्टिंग लेफ्ट. ये मुझे पता रहना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट. सो दिस आई हैव अज्यूम्ड एज HB, द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट B. This 24 is acting up, there is no other vertical force acting, so here there must be a vertical force acting down to balance this. So this I will call as VB. हम लॉजिकली सोच के करेक्ट डायरेक्शंस पहले से ही अज्यूम कर सकते हैं. That is one thing. अगर अपने को लॉजिकली समझ में नहीं आता है क्या करना है, then randomly any direction can be assumed, and if you get right answer it is good. If it is minus, it means that assumed direction is wrong and that must be in the opposite. सिर्फ यही मतलब रहेगा. अभी देखिए ये 66 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा. अगर मैं बी पर लेता हूं, ये 5, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा. सो बोथ दीज मूवमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि 5 इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल हियर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इफ यू सी इट विल गिव द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. इसका मतलब यहां पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आना चाहिए टू बैलेंस दिस. इट इज एमबी. सो दिस इज हाउ आई हैव अज्यूम्ड लॉजिकली. अब देखते हैं अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऑल माय अज्यूम डायरेक्शंस आर राइट. अगर नहीं समझ में आता है तो यू अज्यूम एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, कुछ भी अज्यूम कीजिए. जो यहां अज्यूम करेंगे फॉर दिस जॉइंट बिकॉज इट इज द सेम जॉइंट बी, हियर वी हैव टू अज्यूम अपोजिट ऑफ दिस. ये मैंने डाउनवर्ड अज्यूम किया तो यहां पर VB आई विल कंसीडर अपवर्ड. दिस HB आई हैव कंसीडर्ड लेफ्टवर्ड, सो हियर आई विल कंसीडर HB एट राइटवर्ड. अगर मैंने यहां पर क्लॉकवाइज कंसीडर किया है तो हियर आई विल कंसीडर MB एंटी क्लॉकवाइज. व्हाई सो? बिकॉज व्हेन आई विल जॉइन दीस टू मेंबर्स एट जॉइंट B, all these assumed forces will balance each other because there is no net force acting here at the joint. तो यहां पर मैंने जो भी अज्यूम किया यहां पर उसके उल्टा अज्यूम कर लूंगा. व्हाई? क्योंकि जब मैं दो मेंबर को ज्वाइन करूंगा ये ज्वाइंट पर यहां पर कोई फोर्स नहीं है. That's why the net force here must be 0. So this upward will get balanced by this upward, this leftward will get balanced by this horizontal rightward, this clockwise movement will get balanced by this anti-clockwise movement. तो पहले हमको क्या करना है? सबसे पहला काम सपोर्ट रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे. सपोर्ट रिएक्शन डिटरमाइन करने के बाद क्या करेंगे? मेंबर्स को हम ब्रेक कर देंगे इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स. So how many are the parts? There are 3 members. This is a portal frame. It is made up of 3 members. तो सेपरेट कर दें 3 members.
जितने भी फोर्सेस सिस्टम में पहले हमको नोन है, पहले उतना स्केच कर दिया। फिर जहां पर भी हमने ज्वाइंट से सेपरेट किया, बिकॉज दिस ज्वाइंट विल बी रिजिड ज्वाइंट। अगर ये रिजिड ज्वाइंट है तो रिजिड ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट के वैसा बिहेवियर देगा। द ज्वाइंट इज रिजिड, सो द बिहेवियर विल बी लाइक अ फिक्स ज्वाइंट। If it is a fixed joint, then for that we consider three reactions. So here we have considered these three reactions. Logically, कि ये अगर upward है तो it has to be balanced by a downward force. अगर ये rightward है then it is to be balanced by a leftward force. If it is anti-clockwise, this 5 will also produce the anti-clockwise. So there must be a clockwise moment acting here. यहाँ पर जो भी हमने assume किया, whatever we have assumed here, the opposite reactions we will consider here, so that when we will join the two, the net must be equal to 0. अभी सी पर क्या करेंगे देखिए, दिस इज द राइटवर्ड फोर्स एक्टिंग, सो इट हैज टू एक्ट लेफ्टवर्ड टू बैलेंस दिस आई कॉल एज एसी बिकॉज दिस इज जॉइंट सी। अभी मुझे नहीं पता है, दिस इज एक्टिंग अप, दिस टोटल लोड विल बी एक्टिंग डाउन, व्हिच ऑफ द टू इज ग्रेटर, दैट आई डोंट नो। कि ये जो डाउनवर्ड है ये बड़ा रहेगा कि ये वी भी बड़ा रहेगा, दैट आई डोंट नो एट दिस स्टेज। तो फिर मैं यहां पर ऐसे एज्यूम कर लेता हूं बीसी अप, आई डोंट नो। अगर ये पॉजिटिव आंसर आएगा तो गुड, माय एज्यूम डायरेक्शन इज राइट। इफ आई गेट दिस बीसी नेगेटिव तो इसका मतलब ये अपवर्ड नहीं रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। व्हाई आई एम अनेबल टू थिंक ओवर इट हियर, क्योंकि ये वीबी का वैल्यू मुझे नहीं पता है। द टोटल डाउनवर्ड लोड, बिकॉज दिस स्पैन इज 8 मीटर, हियर द स्पैन इज 10 मीटर। अगर दिस टोटल लोड एक्टिंग डाउन विल बी 24, अगर वीबी का वैल्यू 24 से ज्यादा आता है सो इट इज एक्टिंग अप, सो इन दैट केस बीसी विल बी डाउन। अगर वीबी का वैल्यू 24 से कम आता है तो this plus this must be equal to that 24. So at this stage I don't know how much this value is. तो यहाँ पर मैंने ऐसे assume कर लिया ना। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है, चलिए तो फिर ये भी यूडीएल का भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, मुझे लगता है बहुत मूवमेंट हो जाएगा। तो लेट अस सी, हम यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एमसी लेते हैं। ये मैंने assume किया है, जहां जहां लॉजिकली हम बहुत आसानी से सोचकर assume कर सकते हैं तो लॉजिकली assume करना चाहिए। नहीं है तो फिर हम ऐसे रैंडम कुछ तो ले लेंगे डायरेक्शन। इफ यू गेट पॉजिटिव दैट अज्यूम डायरेक्शन इज राइट, इफ यू गेट माइनस दैट अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, दैट मस्ट बी द अपोजिट। अभी देखिए सी पर, दिस इज जॉइंट सी एंड दिस इज आल्सो जॉइंट सी। यहां पर मैंने लेफ्टवर्ड लिया है तो यहां पर राइटवर्ड आ जाना चाहिए। सो दिस इज एसी बिकॉज़ these two will be balanced each other when I will join. This BC I have assumed up, so here there must be a BC acting down, so that when I will join the two must balance each other. This is clockwise I have considered here, so there must be an anti-clockwise movement MC, so that these two, when I will join, these two movements will balance each other. Is it okay? ये तुमको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताया है? What we have to do? हमको क्या करना पड़ेगा? अगर पोर्टल फ्रेम देता है, हमारे सिलेबस में we are having only determinate portal frames. What is the step 1? Get support reactions. Get support reactions, that is step 1. पहला हम support reaction determine करेंगे। जो भी determine, it was a fixed end, so here we were having 3 reactions. So we have determined reactions, we have got all positive, so all our assumed directions are right, हमने वो direction दे दिया है। फिर दूसरा स्टेप क्या किया? We have break this portal frame into number of members. There are 3 members, so we have break into 3 members. जो भी हमको सपोर्ट रिएक्शन पता था, we have sketched support reaction. Whatever loading was given, we have sketched the loading. Whatever loading was available, that we have sketched. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया? As we have separated the members, the joints here where the 2 members are meeting, these are rigid joints. These are rigid joints. If these are rigid joints, then the behavior will be like a fixed joint. और फिक्स जॉइंट के ऊपर हम कितने रिएक्शन लेते हैं? 3। दैट्स व्हाई मैंने ये बी के ऊपर 3 रिएक्शन लिया। जो भी मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया, यहां उसका उल्टा अज्यूम किया। फिर यहां पर भी मैंने कुछ डायरेक्शन अज्यूम किया सी भी, बिकॉज दिस इज अगेन ए रिजिड जॉइंट। यहां पर मैंने उसका उल्टा अज्यूम किया। जहां जहां हम लॉजिकली सोच के अज्यूम कर सकते हैं, उतना हमें लॉजिकली सोचकर अज्यूम करना चाहिए। जहां हमको मुश्किल होता है अज्यूम करने के लिए, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, अज्यूम एनी डायरेक्शन। जब दूसरा मेंबर स्केच करेंगे तो उसका उल्टा स्केच कर देना चाहिए डायरेक्शंस, so that when you will join the 2 members at the joint, as there is no external force acting here, the net must be 0. That's all. Now start determining these unknowns. How many are the unknowns now? If you will see,
HB, VB, MB, HC, VC, MC. How many are the unknowns? These are the only unknowns. HB, VB, MB, these are the three unknowns. Yeah, HB, VB, MB, they are already considered, so need not to count them again. Now SC, VC and MC, these are the another unknown. So how many are the unknowns in all? There are 6 unknowns. And how many are the numbers? 1, 2 and 3. So 3 equations are available for equilibrium of this number. 3 equations are available for the equilibrium of this number. 3 equations are available for the equilibrium of this number. So if you will see, in all we are having 9 conditions available. Is that right? Because it is a set of non-collinear, non-coplanar forces. So here we will have 3 equations of equilibrium. For this we are having 3 conditions of equilibrium. Here again we are having the 3 conditions of equilibrium. So in all we are having 9 conditions of equilibrium, but the unknowns are 6 only. So these 6 unknowns can be determined from the 9 equations. Actually we need not to use all 9 equations. We can get our problem solved in just 6 equations. हम किसी भी मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, whichever you feel convenient. जहां पर अननोन कम है हमने वहां से स्टार्ट करना चाहिए. If I see this member AB 1, 2 and 3, there are 3 unknowns. Okay, no problem, 3 conditions है. लेकिन अगर मैं BC से स्टार्ट करता हूं तो it appears that there are 6 unknowns. HB, VB, MB, HC, VC, MC. तो हमने BC मेंबर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. या तो अपने AB मेंबर से स्टार्ट करना चाहिए या CD मेंबर से स्टार्ट करना चाहिए. Because here again there are only 3 unknowns. So it is not compulsory to start from AB only. जो मेंबर हमारे लिए कन्वीनियंट है, we must start from that member. Anyway, we have to get all the required unknowns. So not compulsory to start any specific member जहां पर number of unknowns कम है. A member which is convenient to us, where we can determine unknowns easily, we must start from that member. So what we will do, if I do sigma fx, say I am for member AB. मैं suppose member AB से start कर रहा हूँ. If I do sigma fx is equal to 0, because system must be in equilibrium, so this member must also be in equilibrium. If I am saying sigma fx is 0, it means that the rightward forces I am equating with the leftward forces. So this is vertical, this is coupled, these two will not be there in this equation. This phi is acting right, so this will be there. This vertical will not be there, this movement will not be there. This HB is the only horizontal force acting and it is acting in the opposite direction, so that must be equal to HB. नहीं तो मुझे क्या लिखना पड़ता? Phi minus HB is equal to 0. Rightward forces are positive, the leftward forces are negative, so phi minus HB is equal to 0. इतना करने से अच्छा I am just reducing one step. एक स्टेप हम कम कर रहे हैं. What we are doing? The rightward forces we are equating with the leftward forces. So phi is equal to HB. This is positive, so this assumed direction is right. It is kilonewton. What is next now? Do sigma Fy is equal to 0. If I do sigma Fy is equal to 0, so this 24 is acting up. This is a horizontal force. This is a couple. These two will not be there. This horizontal will not be there. This couple will not be there. This VB will be there in the equation. And this is acting, 24 is acting up. This VB is acting down. So the upward forces are equal to downward forces. So this is also right. 24 kilonewton. As I have got positive answer, so it means that my assumed direction is right. Is it okay? So I have the value of HB. I have got the value of VB. What is next now? Do sigma moment is equal to 0. Say now I am doing sigma moment is equal to 0. Either you take moment about A, you take moment about B, or you can take moment about any point in between. Sigma moment is equal to 0 about any point in this member AB. Suppose I am taking moment about A is equal to 0. चाहिए तो आप B के about भी ले सकते थे. यहाँ पर दोनों दो वैल्यू दो फोर्सेस जाएंगे, यहाँ से भी दो फोर्सेस जाएंगे, एक ही बात है. और अदरवाइज if I take sigma moment about B is equal to 0, suppose VB and HB will pass from there, तो क्या बचेगा? There will be this MB, this is clockwise,
So I will equate the clockwise moment with the anti-clockwise moment. This MB is clockwise. What about moment of this HB and VB? The moment of these two forces will be 0 because it is the same point B about which I want to take moment. There will not be any moment because of this 24 because it is again passing from the point B. So moment will be there because of this 5 and this 66 kilonewton meter. This 5, it will produce anti-clockwise moment. If I want to take moment about this point, this is the line of action of force, so it will produce anti-clockwise moment. So that I will write on the other side. It is 5 into 10. This 66 is again anti-clockwise, so plus 66. So this is equal to 50 plus 66. So it will be equal to 116 kilonewton meter. And this value is also positive, so this assumed direction is also right. So what I will write here, it is 5 kilonewton. I have got the value for VB also. This is 24 kilonewton. I have got the value for MB. It is 116 kilonewton meter. And my assumed directions are right. Okay, fine. So I can write this MB as equal to 116. I can write this VB as equal to 24. I can write this HB as equal to 5 kilonewton. Is it okay? Because now I have got these values. I have got these three unknowns. Now these are the only three unknowns. या तो हम member BC लेंगे या member CD लेंगे and I will get the required unknown. What do you suggest? क्या हमने BC solve करना चाहिए या हमने CD solve करना चाहिए? Where we will have less complications, where we can get the required unknowns easily. What do you suggest? हमने कौन सा member solve करना चाहिए? Member BC solve करेंगे या member CD solve करेंगे? BC. Okay, ठीक है, fine. Is it compulsory to solve member BC only? क्या हम डायरेक्टली CD भी solve कर ले सकते थे? अगर हम CD member पर जाएंगे, these are the three unknowns. We could have get the answers directly also. हमको CD में भी डायरेक्टली मिल सकते थे. BC में क्यों अवॉइड कर रहा था? Because more number of forces are appearing there. So we can avoid that. CD में कम number of forces है. Easily we can get our required answers. समझ रहे हो कि why I am preferring member CD? I am preferring member CD because less number of forces are acting and very easily we can get the required unknowns. है ना? Okay, fine. Thank you, Axial. So I will prefer to solve member CD because it is less complicated. हमको BC भी बाद में यूज करना पड़ेगा जब हमको शेयर फोर्स डायग्राम वगैरह चाहिए तो. We have to do that. The value of MB we have got as equal to 116. The value of HB we have got as equal to 5. The value of VB we have got is equal to 24. Now I will solve for member CD. If it is member CD, this member, if I do sigma fx is equal to 0, it means that I am equating the rightward forces with the leftward forces, so C is equal to 5. This is again positive, so this assumed direction is right. Next you do sigma Fy is equal to 0. So Vc is the only force acting. The downward forces must be equal to the upward forces, so Vc is equal to 0. The downward force is Vc, there is no upward force. There is no inclined force to get the required answer. So Vc is 0. There is no other inclined or vertical force acting. Now next you do sigma moment is equal to 0, say about point C is equal to 0. So there will not be any moment of this AC and BC as they are passing from the point C. MC will be there and the moment because of this 5 kilonewton which is acting at D, the moment will be there because of this force. So MC is anti-clockwise because of these 5 C's. This is the line of action of force, this is the point, here is the perpendicular distance 4 and it will produce clockwise moment. So MC I am equating it is anti-clockwise, I am equating with the clockwise moment. It is 5 to 4. So that will be equal to 20 kilonewton meter. And this answer is also positive. So this assumed direction is also right. So luckily here we have got all our answers positive. It means that all our assumed directions are correct.
So SC is equal to 5 kilonewton, VC is equal to 0 and MC is equal to 20 kilonewton meter. यहाँ पर मैं राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कुछ स्केच नहीं करूंगा. मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फोर्सेस के लिए राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे बिल्कुल स्केच नहीं करूंगा. व्हाई? क्योंकि अगर एक जगह अपवर्ड है तो वही वैल्यू भी फॉर अदर मेंबर इट इज डाउनवर्ड. तो यहाँ पर देयर इज नो सेंस इन दैट. जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड्स. Okay, so here I have got all the required unknowns. MC is equal to 20 kilonewton meter. This VC is equal to 0 and SC is equal to 5. This is equal to 0, this is equal to 5 and this is equal to 20 kilonewton meter. Okay, done. We have got all the required unknowns. Step 1 in case of portal frames, get the support reaction. What is step 2 in case of portal frame? Separate the member into number of components. अगर ये 3 member portal frame है, then break the plane or break the portal frame into 3 components. So it is break into 3 parts. Joint जो भी रहेंगे, all those are rigid joints. इंटरनल हिजेस हो सकते हैं बट दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. अभी हमारा जो रिवाइज सिलेबस करके दिया है डीएससी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें इंटरनल हिजेस को कंसीडर नहीं किया है. अदरवाइज इंटरनल हिजेस भी रहते हैं. जो रेगुलर बैच था उसमें इंटरनल हिजेस के लिए भी क्वेश्चंस थे. दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस. लेकिन डीएससी स्टूडेंट के लिए सिलेबस रिवाइज किया है, उसमें इंटरनल हिजेस रिमूव कर दिया. देयर विल नॉट बी एनी इंटरनल हिजेस. अगर इंटरनल हिंज रहता तो फिर वो द बिहेवियर विल बी लाइक ए हिंज. वहां पर सिर्फ 2 ही अननोन रहते, फिर एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. लेकिन हियर फॉर आवर सिलेबस वी डोंट हैव द इंटरनल हिंजेस. सो ऑल जॉइंट्स आर रिजिड जॉइंट. वेरेवर इट इज ए रिजिड जॉइंट यू रिप्लेस इट बाय 3 रिएक्शंस. जो रिएक्शन हम एक मेंबर पर बताएंगे वही जॉइंट पर दूसरे मेंबर में अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन बताएंगे. बिकॉज व्हेन वी विल जॉइन द टू, the net must be acting 0 as there is no force acting at joint B. Similarly at joint C. Step 1 support reaction. Step 2 breaking the element into number of components. Step 3 get the required unknowns. Step 4 क्या है? Now we have to sketch the shear force and bending moments. How to sketch shear force and bending moment now? See. What will be when the force is acting along the axis of the member, that we call as the axial force. See, this 24 is the axial force. If it is axial force, then axial force is compressive in nature. Say this is the axial force diagram. Here I will write compressive. What is the magnitude of force? यहाँ पर है 24 kilonewton. यहां पर भी कितना है? 24 किलोन्यूटन. एंड यहां पर मैंने लिख दिया है कॉम्प्रेसिव. हियर आई विल राइट AFD. इट इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम. AFD, एक्सियल फोर्स डायग्राम. इज दैट ओके? बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग along the axis of the member, so it is a axial force diagram. Now what about the shear force diagram? देखिए फ्रेम ऐसे है. दिस इज हाउ द फ्रेम इज. हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं. देखिए जब अगर बीम ऐसे रहता है, यहाँ सपोर्ट रहते हैं, अगर ये रिएक्शन अप है, देन वी कंसीडर दिस फोर्स इज shear force is up and this shear force is down. This is positive SFD, shear force. तो यहाँ पर भी जब हम अंदर खड़े हैं तो अंदर से इधर देख रहे हैं सपोज, तो ये अगर shear force रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर ऐसे रहेगा तो ये shear force नेगेटिव रहेगा. अब यहां से देख रहा हूं, दिस इज एक्टिंग राइटवर्ड बिकॉज आई एम द ऑब्जर्वर इज हियर. अगर ऐसे है तो ये डाउन रहेगा, तो यहां पर shear force पहले 5 डाउन, ये डायरेक्शन में आ रहा है. क्योंकि मैंने पहले बोला है अगर हमारा बीम रहता है तो बीम कैसे रहेगा? इफ सपोज दिस इज ए बीम, यहां पर ऑब्जर्वर है, वो क्या करते हैं? टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, दिस वी कॉल एज द पॉजिटिव shear force.
अगर ऐसा रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन द लेफ्ट इट इज निगेटिव शेयर फोर्स। अब जो ऑब्जर्वर यहां है, राइट, ऐसे है, दिस इज द लेफ्ट ऑफ दैट एंड इट इज एक्टिंग डाउन, तो उसके लेफ्ट में अगर कोई डाउनवर्ड रहेगा दैट इज निगेटिव शेयर फोर्स, सो दिस विल बी ए निगेटिव शेयर फोर्स। फिर यहां से यहां तक देयर इज नो अदर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग और देयर इज नो शेयर फोर्स एक्टिंग, तो यहां तक देयर इज नो शेयर फोर्स एक्टिंग। फिर यहां पर 5 एक्टिंग अप, तो ये 5 इधर आ गया है, सो दिस इज माइनस, इट इज 5, यहां पर भी 5, दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम। हम तीनों मेंबर, बिकॉज देयर आर 3 मेंबर्स, हर मेंबर का एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। इसका एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा, इसका एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। तो वो तीनों को हम बाद में अगर चाहिए तो हम कंबाइन भी कर ले सकते हैं। हाउ द बेंडिंग मोमेंट इज, देखिए अगर ऐसे बीम रहता है, यहां ऑब्जर्वर है, अगर ये फोर्स है तो यहां पर हम बोलते हैं दिस बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। अगर ये रिएक्शन का इधर, अगर लोडिंग है तो दिस विल बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। नाउ हियर इज द ऑब्जर्वर, यहां पर है दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउन, ये ऑब्जर्वर, दिस इज ए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। What is the moment acting? See, this 66 is also same. So this is minus 66 is acting here. फिर यहां से यहां तक जाते जाते मूवमेंट कितना आ गया है, ये दिस इज 24, कितना रहेगा, सी इफ आई टेक मोमेंट हियर एट बी, हाउ मच दैट विल बी, minus 66 minus 5 into this 10, so that is minus 116। तो यहां पर minus 66 है और यहां आते आते minus 116 हो गया है। क्या हमने कुछ मिस्टेक किया है? यहां 66 है और यहां आते आते हो गया है 116 माइनस, दिस इज BMD, और ये आएगा यहां पर 116, सो इट विल गो बैक टू 0। 66 यहां पर रहेगा minus 116 और बिकॉज ऑफ दिस 5 इट इज अ कॉन्संट्रेटेड लोड, सो द वेरिएशन इज लीनियर। यहां पर ये 116 हो गया है, फिर ये 116, इट विल ब्रिंग इट बैक टू 0। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। So this is the axial force diagram, shear force diagram and the bending moment diagram for member AB. Similarly, now we have to sketch the axial force diagram, shear force diagram and bending moment diagram for the member BC. हमने बीम में सिर्फ एक ही मेंबर रहता था एंड बी सॉल्व फॉर वन मेंबर, बीम इज वन मेंबर। अभी यहां पर कैसे, जैसे हमने बीम के लिए किया था सेम थिंग वी आर डूइंग, लेकिन यहां पर 3 मेंबर्स है, सो वी हैव टू सॉल्व इट फॉर 3 मेंबर्स, दैट्स ऑल। व्हाट अबाउट फॉर दिस मेंबर BC? देखिए हाउ द एक्सियल फोर्स डायग्राम विल बी, दिस इज द मेंबर BC, दिस इज 5, इट इज कॉम्प्रेशन, राइट, 5, फिर ये वर्टिकल और ये कपल नहीं आएगा, ये यूडियल नहीं आएगा, ये वर्टिकल और ये कपल नहीं आएगा, दिस इज 5 डन, एंड दिस इज कॉम्प्रेसिव, एंड दिस इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम फॉर मेंबर BC। ये मेंबर AB था, उसके बाजू मैंने स्केच कर लिया, मेंबर BC है, अभी उसके नीचे स्केच करेंगे, मेंबर CD है तो उसके साइड में स्केच कर लेंगे, दैट्स ऑल, दैट इज हाउ वी हैव टू स्केच। और बाद में अगर मुझे कंबाइंड डायग्राम चाहिए तो फिर मैंने तीनों एक्सियल फोर्स एक जगह एक टोटल फ्रेम स्केच करके बता देना चाहिए, शेयर फोर्स डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वी हैव टू ऐड द 3, दैट्स ऑल। व्हाट अबाउट द शेयर फोर्स डायग्राम? शेयर फोर्स डायग्राम, हाउ मच इट इज हियर, 24 अप। Now what it will be, because this is linear, so it will reduce linearly because it is uniformly distributed load, so the variation is linear। shear force में ये कपल नहीं आएगा, ये HB नहीं आएगा, this is only 24।
It is UDL that will vary linearly. तो यहाँ पर आने के बाद कितना हो जाएगा? This 24 up and 8 3 is 24 down. So that has to be 0. This is positive. Is it right? ये 24 up है, ये UDL है, the variation is linear, so the variation is linear here. अगर UDL रहता है तो shear force का variation linear आएगा. कैसे बता सकते हैं हम? At any distance x अगर आपको चाहिए, तो how we can have? It is 24 minus 3 into x. 3 is the intensity of load, x is the distance, so the total load will be 3 into x. This is shear force at any distance x. What you will find here? The shear force is varying with x and the order of this equation is 1. So it means that the variation is linear. So when there is uniformly distributed load acting, the shear force variation is linear. This 24 up, this load is acting down, so it is down. And it is 0 here. Is it okay? What about the bending moment diagram? See, bending moment. What is the moment here? 116. ऐसा moment है. So this is negative bending moment. So this is this 116. Right? If you want to have the bending moment at any distance x, यहाँ पर अगर मुझे bending moment चाहिए, how you can have the bending moment at any distance x? That will be equal to minus 116. Because of this 24, it is plus 24 into x. At any distance, the force multiplied by the distance. Because of this UDL, minus 3 into x. 3 is the intensity, x is the distance, so the concentrated load will be 3 into x, and that will act at x by 2 at half the distance. I am taking moment here at any distance x. So here you will find that the bending moment variation is parabolic because the bending moment changes with the square of x. So the bending moment variation is a parabola. Okay. So now you determine this, and this is how you will find the bending moment variation will be. This is minus. How much is moment here? It is 20. This is how the bending moment variation will be. अगर आप देखोगे at C where the x is 8 meter, so what it will be? Minus 116 plus 24 into 8 minus 3 into 8 multiplied by 8 by 2, that will be equal to 4. कितना आएगा ये? 2 1s are 2 4s are. It is minus 116 8 चौक कितना 8 24, and it is again minus 96 plus 24 8 24, 24 into 4 plus 192. So that will be equal to, will it be all right? Is it correct? 20 kilonewton meter minus. So here this is minus 20. Or because of this 20 kilonewton meter, it will go back to 0. Because up to here, just to the left of C, it is minus 20. And just at the right of C or at C, this 20 will also get added. So it will be 0. This is the bending moment diagram for BC. Axial force diagram, shear force diagram, and this is the bending moment diagram. Is it okay? So, this is how we can sketch the shear force diagram, the bending moment diagram, and the axial force diagram for member AB, for member BC, now for member CD. Axial force diagram, see this is the member. मैं यहाँ पर स्केच करता हूँ एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है. So that I am sketching here. Axial force, this BC is acting down. There is no other force acting in the direction of the force. So it means that the axial force diagram is 0. This is the axial force diagram. क्योंकि ये BC is 0, there is no force acting in the direction of the member, in the direction of the axis of the member.
सो एक्सियल फोर्स डायग्राम इज 0. अभी यहां से देख रहे हैं, हियर इज द ऑब्जर्वर, राइट. उसका जो लेफ्ट में रहता है, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. इफ इट इज एक्टिंग अप, देन वी कॉल दैट एज पॉजिटिव. सो दिस इज पॉजिटिव शेयर फोर्स 5. यहां से यहां तक और कोई लोड नहीं है, फिर यहां पर वापस 5 हो गया है. सो दिस इज गोइंग बैक 5 एंड दिस इज पॉजिटिव. दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम. What about the bending moment diagram? The bending moment here. देखिए यहां से देख रहे हैं, this moment is acting in the section. कैसे एक्ट हो रहा है? अगर मैं ये CD सेक्शन को अगर ऐसे स्केच करता हूं, दिस इज C, दिस इज D, तो C पर कैसे एक्ट हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग. करेक्ट है. तो मोमेंट क्या हो जाना चाहिए? निगेटिव, क्योंकि ऐसा जो फोर्स रहता है, इसका जो मोमेंट आता है दैट वी कॉल एज पॉजिटिव. तो ये जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, दिस विल बी ए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. तो दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. व्हाई दैट विल बी नेगेटिव? क्योंकि मैंने पहले बोला अगर इसका जो मोमेंट रहता है दैट वी कॉल एज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ये मोमेंट उसका अपोजिट नेचर का है. सो दैट हैज टू बी ए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वी कॉल द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि सेक्शन के ये साइड में ऐसे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, बट दिस मोमेंट इज ऐसे है ऑफ ऑपोजिट नेचर. सो दैट इज टू बी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. और यहां से यहां तक आने, यहां पर तो मोमेंट 0 है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्संट्रेटेड लोड. सो द वेरिएशन मस्ट बी लीनियर. हियर इज द बेंडिंग मोमेंट 0. दिस इज मेंबर CD, एक्सियल फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. Why the variation is linear? यहाँ तो 20 किलोन्यूटन मीटर कांस्टेंट लोड है, but the bending moment changes because of this horizontal 5 kilonewton load, 5 into x. तो जैसे जैसे ये इधर आते रहेगा, the value of x will keep on increasing and the bending moment varies linearly. It is minus. How? Bending moment at any distance x will be equal to, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ at any distance x, what it will be? Minus 20 plus 5 into x. So you see here the bending moment variation is linear. That is because of this concentrated load. So the bending moment variation is linear. And if I put x is equal to 4 at D, यहाँ पर D पर कितना हो जाएगा? The value of x will be equal to 4. If I put x is equal to 4, so minus 20 plus 20 will be 0. That's why the bending moment at D is 0. Is it okay? So this is how we can sketch the shear force, axial force, shear force and bending moment diagram. Is that clear? ये समझ में आया है क्या? कोई यहाँ पर आंसर करेगा अभी? Please answer in the chat box. Have you understood this? What are the steps for a portal frame? Portal frame के लिए steps है. सबसे पहला सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने का, सेकंड मेंबर्स को स्प्लिट करने का, जहां पर भी जॉइंट्स है, those are the rigid joint because the internal hinges are excluded from your syllabus, right? That's why whatever joint will be there, all those are the rigid joints. अगर rigid joint रहेंगे तो वहां पर हमने 3 रिएक्शन बताना चाहिए. एक जॉइंट पर हमने जो भी रिएक्शन बताया, दूसरे जॉइंट पर उसका अपोजिट नेचर का रिएक्शन बताना चाहिए, so that the net must be equal to 0. मेंबर सेपरेट किया, फिर उसके बाद हमने वो अननोन डिटरमाइन करने के लिए first you note down what are the unknowns and then use sigma fx required moment for various members and get the required unknowns. Then here you put the correct direction for those unknowns, then start sketching the axial force, shear force and bending moment diagram for different members separately. So this is how a problem can be solved. Now take another question. Portal frames are important from your syllabus and examination point of view. You may expect questions on portal frames. बीम पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीम पर ज्यादा नहीं रहेगा. बीम पर एम्फेसाइज गिवन इज लेस एंड मोर एम्फेसाइज इज गिवन ऑन द पोर्टल फ्रेम. लेकिन अगर हमको बीम नहीं पता है तो हम पोर्टल फ्रेम नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हमको बीम भी पता रहना चाहिए. सो दैट आई हैव टेकन एग्जांपल्स अर्लियर फॉर बीम्स. अलग अलग फोर्सेस कैसे रहते हैं, अलग अलग नेचर का फोर्सेस क्या है, सपोर्ट कंडीशंस क्या है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, पॉइंट ऑफ काउंटर ऑफ लेक्चर क्या है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दोज लेक्चर्स.
Now we can make use of that knowledge to solve the problems on portal frames. Now say, take the question number 14. Here it is. It is a hinge and there is a horizontal load at 2 meter. This is 1 meter. Force is 10 kilonewton horizontal. There is a UDL here. It is 4 meter span and the load is 3 kilonewton per meter. Next we are having a vertical member of 2 meter. It is a ruler. A, B, C, D and E. These are the joints. It is 2 meter. See, here is the question. And the question is same. What is the question? Sketch the shear force and bending moment diagram for the portal frame. Again we are having 3 members. Which are the 3 members? AC is 1 member, CD is the another member, DE is the third member. There are 3 members. Right? Is it a determinate or an indeterminate portal frame? देखिए ये hinge है. How many reactions we consider for hinge? 2. How many reactions we consider for ruler? 1. hinge में क्या करते हैं? एक vertical लेते हैं, एक horizontal लेते हैं. ruler में क्या करते हैं? Whatever direction of rolling, we must consider reaction perpendicular to that. देखिए this is the ruler. या तो हम ruler ऐसे बताते हैं या ruler हम ऐसे भी बता सकते हैं. Right? See, system is free to roll in this horizontal direction, so there will be a vertical reaction. System is free to roll in this horizontal direction, so there will be a vertical reaction. Sometimes we show just by a circle. This is again a case of ruler. So it is free to roll in horizontal direction because this is a horizontal surface. So the reaction is vertical. Sometimes, if suppose the ruler is on a inclined surface, and ऐसे है surface, the ruler is on an inclined surface. तो हमने क्या करना चाहिए? This ruler we have to consider one reaction, and that reaction must be the perpendicular to the direction of rolling. अगर suppose ये 30 डिग्री बना रहा है, this is perpendicular to that, so this angle with the horizontal must be equal to 60. ए भाई आवाज कम करो. 60 degrees. This is perpendicular, it is 30 degrees, so it must be 60 degree. Whatever is the direction of rolling, the reaction must be perpendicular to that. For rulers, ruler are free to move in horizontal direction. वहां पर rotation allowed रहता है. That's why those two reactions will not be there. Only one reaction, and that will be perpendicular to the direction of rolling. So here it is perpendicular to the direction of rolling, so there will be one reaction here, and that is this. चलिए, I assume these directions. Say this is HA because this is joint A. Say this is VA because this is joint B. A. So it must be VA. Say this is E, so it is VE. I assume these directions. हम लॉजिकली सोच के करेक्ट डायरेक्शन भी अज्यूम कर सकते थे. अगर हमको नहीं सोचना है तो यू अज्यूम एनी डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव आता है तो दोज अज्यूम डायरेक्शंस आर राइट. अगर नेगेटिव आता है तो दैट अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग. दैट मस्ट बी द अपोजिट. दैट्स ऑल. व्हाट इज स्टेप 1? मुझे इसका shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्केच करना है. व्हाट इज स्टेप 1? गेट द सपोर्ट रिएक्शन. सो फर्स्ट, it is a determinate truss, it is a determinate portal frame. Why? Because the unknowns are 3 only. This hinge is replaced by these 2 reactions. This ruler is replaced by this 1 reaction. So these are 2, this is 1. In all there are 3 unknowns. They are non-congruent and non-parallel. So it is a determinate portal frame. Is it right? Unknown 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अरे यार screen blur. From my side I don't have any problem. ये सब साला पूरा जो स्पीड रहता है लेक्चर का वो सब डंप हो जाता है.
What is it now? Is it okay? आप क्वालिटी इंप्रूव कीजिए स्ट्रीमिंग का 1080 पर जाइए, हो सकता है यू विल गेट बेटर. ओके फाइन, थैंक यू. ये सब साला पूरा स्पीड एकदम, जो एक टेम्परमेंट जो चलते रहता है, जो एक स्पीड, वो सब साला ब्रेक हो जाता है बीच में कुछ तो चलने से. ओके, नो प्रॉब्लम. हमको चलना पड़ेगा ये सब प्रॉब्लम्स के साथ. सिचुएशन डिफिकल्ट है, चलेंगे चलेंगे. सो नाउ get the support reactions. Do sigma fx is equal to 0 first. 3 अननोन है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है. अगर अननोन 3 रहते हैं तो वो नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल रहना चाहिए. अगर अननोन कॉन्करेंट रहते हैं या अननोन पैरेलल रहते हैं तो हम 3 अननोन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दैट विल बिकम ए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. अगर ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो अननोन 3 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. अगर 3 अननोन है तो वो नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल रहना चाहिए. अगर कॉन्करेंट रहते हैं या पैरेलल रहते हैं तो 3 इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते. देन दैट विल बिकम ए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. सो इट इज ए स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बिकॉज अननोन्स आर 3, दे आर नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल. ओके फाइन. चलिए, फर्स्ट स्टेप, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन. सिग्मा एफएक्स 0, HA is acting right. So I will equate the rightward forces with the leftward forces. HA is right. This 10 is also acting right, so it must be on the same side of the equation. This is the UDL which must be acting vertically down. तो वो नहीं आएगा इक्वेशन में. BE it is again acting vertically up, तो ये भी नहीं आएगा. So this must be equal to 0 only. So HA is equal to -10. So it means that here our assumed direction is wrong. लेकिन मैं अभी इसको करेक्शन नहीं करूंगा. पहले फर्स्ट आई विल डिटरमाइन ऑल द सपोर्ट रिएक्शंस. डू सिग्मा fi is equal to 0. आफ्टर गेटिंग सिग्मा fi 0, व्हाट इट विल बी? Va is acting up. Ha नहीं आएगा इक्वेशन में. ये 10 किलोन्यूटन नहीं आएगा बिकॉज these are acting horizontal. This is 3 kilonewton per meter. It is the UDL which is acting vertically down. So 3 and it is acting for a span of 4 meters. So the total load acting will be equal to 3 multiplied by 4, 12. So the total load is acting 12, but that is acting on the other side, 12 down. What about this BE? It is also acting up. So the upward forces I am sketching on one side and the downward forces I am sketching on the other side. This is 3 into 4, 12. दो unknown है, so here we cannot get 2 unknown from this equation. I will use some other equation. Take sigma moment is equal to 0. Say I am taking moment about A. I will consider all the forces acting in the system. So there will not be any moment of this HA and VA because they will be passing from the same point A. Moment will be there because of this 10 kilonewton. Clockwise moment I will equate with the anti-clockwise moment. See, this is the force, here is the perpendicular distance and it will produce clockwise moment. So it is 10 into 2. Force multiplied by the perpendicular distance. It is clockwise. What about because of this UDL? This UDL is converted to a concentrated load of 12. So it is 12 and this will be acting at half of this 4 meter span. So that will be acting at 2 meter from here. So it is 12 multiplied by 2. That is again clockwise. So on the same side, the intensity of 3, the span is 4 multiplied by the center of that is 2. So 3 for the 12 multiplied by 2 it will be. Now this is the only force left. And see here, if I take moment about this, because of this force will be acting anti-clockwise. So the clockwise moments are to be equated with the anti-clockwise moment. And so it will be on the other side. It is VE multiplied by the perpendicular distance between these two is nothing but from A to E. This distance is 4 meters. So multiplied by 4. So get the value of VE. It is 20 plus 24 divided by 4. So it is 44 divided by 4. So that must be equal to 11 kilonewton. I have got the value of VE. Put value of VE here and get the value of VA. So VA will be equal to this 12, take it to the other side, minus 11, so that will be equal to 1 kilonewton. So now here, I will correct the directions now.
Now I will write HA I have got minus. So what I will do? I will correct it and I will sketch acting left. How much it is? 10 kilonewton. This VA I have got positive value. So how much this is? 1 kilonewton. This is acting up only. I have got right answer. VE again I have got positive answer for this. It means that this assumed direction is also right. So this is 11 kilonewton. So the step 1 determine support reactions. So we have determined, thank you Noman, you are right, it is 11 kilonewton. So we have got all the required unknowns. The external support reaction, that is step 1. What is step 2? Now break this element into number of components. How to break it into number of components? There are 3 members. A to C is one member, C to D is another member, D to E is third member. So first this is A to C. This is acting up 11 kilonewton. This is acting left. This is 10 kilonewton. It is hinged, so there is no moment here. At B, there is a force acting here, and the magnitude of that force is 10 kilonewton. This is B. This is A. It is C. और अगर आपको याद रहेगा मैंने क्या बोला था, पोर्टल फ्रेम में जो भी मेंबर्स है उनका जो जॉइंट है वो रिजिड जॉइंट है. रिजिड जॉइंट का मतलब बिहेवियर फिक्स के वैसे आएगा. देन वी हैव टू कंसीडर 3 रिएक्शंस. चलिए हम रैंडमली कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं. दिस चलिए ये मोमेंट ऐसे देखते हैं, क्योंकि अगर कुछ माइनस आएगा तो क्या करना चाहिए, दैट वी विल ट्राई टू लर्न हियर. से दिस इज एचसी, this is VC, say this is MC. Right? Because it is a rigid joint, a fixed joint. So there must be 3 reactions. First member. इसके second member. What is second member? It is CD. CD में क्या होगा? There is UDL. What is the intensity? 3 kilonewton per meter. यहां पर क्या किया मैंने, सी पर राइट वर्ड स्केच किया, तो इट मस्ट बी लेफ्ट वर्ड हियर, एच सी. वीसी मैंने डाउन अज्यूम किया था, तो हियर आई विल अज्यूम वीसी अप. एमसी एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया था, तो यहां पर मुझे एमसी क्लॉकवाइज अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन आई विल जॉइन दिस टू द नेट मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस राइट वर्ड एचसी विल गेट बैलेंस्ड बाय दिस लेफ्ट वर्ड एचसी. दिस डाउनवर्ड वीसी विल बैलेंस बाय दिस वर्टिकल अपवर्ड वीसी. This anti-clockwise movement at C assumed here will get balanced by this clockwise movement assumed at C. Because net there is no external force acting at joint C. Similarly at D, we have to assume some forces. चलिए assume करते हैं upward, rightward, clockwise. देखेंगे अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, निगेटिव मैंने जब C पर यहाँ किया तो यहाँ उसका अपोजिट किया. Now D is a fresh point. So here I am assuming randomly. It is VD, HD, and this is MD. यहां पर क्या है, it is 11. That's all. This is the only force acting. There is no horizontal or there is no other force acting. यहां पर मैंने VD अप लिया था, so this is VD down. यहां पर HD लेफ्ट लिया था, तो यहां पर HD राइट. यहां पर मैंने क्लॉकवाइज लिया था, so it must be एंटी क्लॉकवाइज MD. देखते हैं क्या होगा. जो भी माइनस आंसर आता है that must be in the opposite. That's all. 11 नहीं 1 kilonewton. BE. अच्छा BE is 1 है क्या? What is right? 10 multiplied by 2 plus 3 into 4 into 2 is equal to BE multiplied by 4. बराबर है 20, 12, 24 divided by 4. So this is 44 divided by 4 must be equal to 11. VE must be 11. VE is right. Okay. And VA is 1 kilonewton. Okay, fine.
So we are doing the same thing. VA is 1 kilonewton. सब सही है. All these answers are right. Okay. अब how many are the unknowns? देखिए मुझे ये एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन पहले से पता है. अभी अननोन ये है HC, VC, MC. अगर यहां आते हैं तो ये तो तीन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है. HD, BD, MD. यहां पर अगर आते हैं तो और these three are already considered here. So how many are the unknowns in all? Only 6 unknowns are there. And how many are the conditions of equilibrium available? 3 यहां के लिए है, 3 यहां के लिए है, 3 यहां के लिए है. 3 conditions of equilibrium for every member. So if you will see, in all we are having 9 conditions of equilibrium. और unknown तो 6 ही है, तो we need not to use all 9 conditions. We can get the required unknown just using 6 conditions of equilibrium. अब हमने सोचना चाहिए कौन से 6 कंडीशन हमारे लिए बेस्ट रहेंगे. अब हमने which member we must start from? हमने AC मेंबर से शुरू करना चाहिए कि CD मेंबर से शुरू करना चाहिए कि हमने इट इज DE मेंबर, क्या हमने DE मेंबर से स्टार्ट करना चाहिए. Where the unknowns are less, we must prefer to start from there. अगर मैं AC मेंबर देखता हूं तो these are the only 3 unknowns and I have got 3 conditions of equilibrium, I can get this. अगर मैं DE मेंबर देखता हूं तो these are the only 3 unknowns and we have got 3 conditions of equilibrium, we can get the required unknowns here. मैं अगर CD से स्टार्ट करने की ट्राई करता हूं so there are 6 number of unknowns and we will be having only 3 conditions of equilibrium for the equilibrium of this member. तो हम ये मेंबर से CD से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमने कौन से मेंबर से स्टार्ट करना चाहिए. Where the number of unknowns are less, where the unknowns can be determined easily. So what we have to do? Shall we start from AC या CD और DE? Which member we must start from? हम किसी भी मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं. तो ऐसे कोई बहुत फिक्स नहीं है कि हम यही मेंबर से करना चाहिए. We must select a member where the unknowns are less. मैं क्या प्रीफर करूंगा, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, we will solve AC and then we will solve ED. हमको ये मेंबर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जब हम मेंबर के लिए सॉल्व करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, we will get these 3 unknowns. When we will use the condition, the equilibrium condition for this member, we will get these another 3 unknowns and we will get the required 6 unknowns. That's all. So for member AC, for this member AC, if I do sigma fx is equal to 0, what do you mean by sigma fx is equal to 0? The rightward forces only I am equating with the leftward forces. This left is 10. This 10 is right. This HC is also right. So it must be on the opposite side. 10 plus HC. What it shows? It shows that HC is equal to 0. Is it correct? I have got one unknown. HC is equal to 0. VA is 1 kilonewton, तो मैंने 1 ही लिखा है ना. This VA is 1 kilonewton. So what is wrong? अच्छा यहाँ 11 लिख दिया. Sorry. Now it is corrected. VA is 1 kilonewton. Okay. First, sigma fx is equal to 0. I got value of SC. Now do sigma fy is equal to 0. So the upward forces I will equate with the downward forces. This 1 kilonewton is the upward force. ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये HC नहीं रहेगा, MC नहीं रहेगा. This VC will be there. It is acting down. So the upward force will be equal to downward force. VC is equal to 1. ये भी positive, so this assumed direction is also right. So VC is also correct. Third, moment. So I take sigma moment about
C is equal to 0. There will not be any moment because of BC and SC, because those will be passing from here. So those two will get eliminated from the equation. Only this MC will be there. It is anti-clockwise MC. What about moment because of this 10? It will produce again anti-clockwise only. This is the line of action of force. Here is the distance. This is 2 meters. This is 1 meter. This is 2 meters. This is 1 meter. So it is again anti-clockwise. So it is plus 10 into 1. What about moment of this 10? Because this is the line of action of force, this is the direction of force. If I take moment about point C, it will produce clockwise moment, so it has to be on the other side. So it is 10 multiplied by 3. Because I am taking moment about C and this perpendicular distance is 3. There will not be any moment because of this 1 kilonewton, because this 1 kilonewton will be passing from point C only. So there is no perpendicular distance. So the value of MC will be equal to 30 minus 10 will be equal to 20 kilonewton meter. Positive, so this assumed direction is right. ठीक है. So I can write here HC is 0. VC I have got positive answer, so this is also right. MC I have got positive answer, so this is also correct. Okay, 20 kilonewton meter, 1 kilonewton. So I have got the required answers. HC is 0, VC is 1, and MC is 20. It is 1 kilonewton, it is 20 kilonewton meter. Okay. Now which member we will prefer? अब हमने कौन सा मेंबर लेना चाहिए? अब हमने कौन सा मेंबर लेना चाहिए? अगर हम CD ट्राई करते हैं तो there is no harm because now these three are known. This SC is 0, this MC is equal to 20, and this VC is equal to 1. अब अगर if I try this, these three are known, these are the only three unknowns. But there will be more number of forces acting here. I will prefer this member when the forces are less. जरूरी नहीं है कि हमने AC के बाद CD ही सॉल्व करना चाहिए. We can go to ED. If I solve for ED, for member ED, if I do sigma fx is equal to 0, SD is the only force acting, there is no other horizontal force acting, so SD is 0. Do sigma fy is equal to 0, so this 11 is acting up, this BD is acting down, so the upward forces must be equal to the downward forces. नहीं तो क्या लिखना पड़ता है 11 minus BD is equal to 0, take BD to the other side, तो हमको वही मिलता. ये भी पॉजिटिव, so this assumed direction is also right. मैं चाह रहा था कि सारे कुछ आंसर निगेटिव आए, सो दैट हमको समझ में आता था कि अगर माइनस होता है तो क्या करना पड़ेगा. लेकिन अब ऐसे डायरेक्शन अज्यूम हो गए कि ऑल वी आर गेटिंग पॉजिटिव. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सिग्मा मोमेंट अबाउट D is equal to 0. If you take moment about D is equal to 0, there will not be any moment of this VD and HD. There will not be any moment of this 11. Moment is there, this MD only, and this MD is the anti-clockwise moment. There is no other anti-clockwise or clockwise moment acting in the system. So MD is equal to 0. So we have got all the required unknowns. SD is 0, MD is 0, and VD is 11 kilonewton. So we have got all the required unknowns. Now as you know all the required unknowns, you can sketch the shear force and bending moment diagram. We start with one by one member. Say this is member AC. Say for this first. If I sketch axial force, the force which is acting in the direction of member, so that is this 1 kilonewton and 1 kilonewton, and it is compressive. तो compressive हम outside sketch करेंगे टॉटम के और या रेफरेंस लाइन के. लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए this is compressive. It is 1 and 1. This is axial force diagram. AFD. Compressive. यहाँ 1 है और फिर यहाँ तक भी सेम है. फिर this 1 is acting in the opposite direction, so this is 1 and it is acting opposite direction, so that will come to 0. Now shear force diagram. मैंने बोला यहाँ पर खड़े हैं और हम ऐसे देख रहे हैं अभी, right?
तो जो उसका लेफ्ट का है दैट अपवर्ड फोर्स दिस इज पॉजिटिव. नाउ हियर इट इज शेयर फोर्स इज 10. फिर यहां से यहां तक कोई फोर्स नहीं है. देन दिस 10 इज एक्टिंग डाउन. फिर इसके बाद यहां से यहां तक कोई फोर्स नहीं है और ये यहां का जो फोर्स है इस चीज अगेंस्ट 0. सो हियर इट इज 0. दिस इज 10 10. दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम 10. देन देयर इज नो फोर्स अप टू हियर. बी के ऊपर वापस 10 डाउन आ गया है. सो दिस इज बी. इट इज ए बी एंड दिस इज सी. दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम. नाउ व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा इसकी वजह से. सो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल बी, अगर मैं देखता हूं एट बी इट विल बी 10 into 2. दिस इज 2 मीटर डिस्टेंस. यहां पर तो 0 रहेगा एट द एंड सपोर्ट. इट इज 0. 10 into 2 तो बी पर आ जाएगा 20 एंड वेरिएशन मस्ट बी लीनियर. एंड व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट एट सी? देखिए बेंडिंग मोमेंट at B. What do you mean by bending moment? For that we need to consider only one side of the forces. So I will consider only the left hand side of the forces. So it will be 10 multiplied by 2. And that is positive. क्योंकि सेक्शन के अगर ऐसे बेंडिंग मोमेंट रहते हैं, this is a positive bending moment. So it is 20. What about the bending moment just at the left of C? क्योंकि वहां पर एक कपल एक्ट हो रहा है तो जस्ट एट द लेफ्ट जस्ट एट द राइट ऐसे करना पड़ेगा. बेंडिंग मोमेंट जस्ट एट लेफ्ट ऑफ सी कितना रहेगा? दिस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और ये निगेटिव बेंडिंग मोमेंट. सो इट इज माइनस 10 into 1 बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. सो हाउ मच दैट विल बी 20 ओनली. यहां पर भी 20 था, यहां पर भी 20 आया है. तो हियर अगेन इट इज 20. इसका मतलब यहां से यहां तक द बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी. अब क्या हो जाएगा? सी पर जस्ट एट द लेफ्ट जितना बेंडिंग मोमेंट अवेलेबल था दिस एंड दिस -20 क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन का रहेगा -20 एंड इट विल बी इक्वल टू 0. सो इट विल मूव बैक टू 0. दिस इज पॉजिटिव. This is the bending moment diagram. And positive indicates it is sagging. Positive bending moment indicates that it is sagging bending moment. So this is how it will be. The first step was to determine the support reaction. The second to segregate the members or to separate the members. For rigid joint, show the 3 reactions. Whatever reactions you have shown at the joint. At one member, show the exactly opposite reaction for the other member, so that when you will join the two, the net must be 0. उसके बाद क्या करेंगे? Then determine the unknowns and then start sketching the shear force and bending moment diagrams. After for member AC, now you solve it for CD. अभी CD में क्या रहेगा? Axial force. This AC is 0. And what about the value of HD? This HD is also equal to 0. So there is no horizontal force acting. So the axial force diagram is 0 because there is no force acting in the direction of the member. So axial force diagram is 0. What about vertical force or shear force? It is 1. ये कपल नहीं रहेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल 0 है. दिस इज यूडियल, सो द वेरिएशन इज लीनियर. कितना रहेगा? जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ डी. Shear force at left of B. How much that will be? 1 is acting up. Because of this 3, it will be -3 multiplied by this 4. This distance was 4 meter. So 3 multiplied by 4 is 12. So it is 1 minus 12 is equal to -11. So here it is -11. And what about the shear force at D? At D it will be -11 plus this reaction VD is equal to 11. Is it right? So this -11 plus 11 that will be equal to 0. So it will come back to 0. This is, and the variation is linear. This is positive, this is minus, and this is shear force diagram. Right? It is 1 kilonewton.
Then there is UDL, so the variation is linear. Just to the left of D, it is 1 minus 4 3 is 12, so it is minus 11. And just at D, it will be minus 11 plus this 11, and that will come to 0. This is the shear force diagram. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? The shear force diagram is crossing the bottom. At certain position, the shear force is 0. And we know where the shear force is 0, the bending moment is maximum. So this is one of the very important point. We need to locate this point where the shear force will be 0. How to locate? Let this distance is x. Let this distance is kitna tha total 4. So it is 4 minus x. So it is x divided by 1 is equal to 4 minus x divided by 11. Symmetry of triangle. 11x is equal to 4 minus x. So it is 12x is equal to 4. So x is equal to 4 by 12. So it is equal to 1 by 3. So at what distance the shear force will be 0? The shear force is 0 at 1 by 3 meters. The shear force is 0. This is one of the very important point. क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन में बोलता है इसके द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका ये मतलब नहीं है कि you will simply sketch the shear force and bending moment diagram. Whatever are the prominent points or the important points, those also you have to show. Which are the important points? Where the shear force is 0, where the shear force is maximum. Where the bending moment is 0, where the bending moment is maximum. Those are the important points. So here the shear force is 0. So we have to locate this position where it is, and we have sketched the linear variation using the concept of symmetry of triangle. We have located this point. So we have done with the shear force diagram. अभी next क्या रहेगा? Bending moment diagram. How to sketch the bending moment diagram? Same अभी bending moment. Say this is the reference. Bending moment at any distance x. What will the equation for the bending moment at any distance x? It will be 1 because of this reaction into x. Because of C, this couple will also get added. क्योंकि जो डायरेक्शन में ये रिएक्शन का मोमेंट आएगा, कपल का भी वही डायरेक्शन में मोमेंट है. So that will get added to that plus 20 because it is coupled. So we need not to multiply with any distance. Now because of this UDL, it is minus 3 into x by 2. So it is nothing but x plus 20 minus 1.5 x square. This is the bending moment at any distance x from C. If I put x is equal to 0, I will get bending moment at C. How much it will be? 20, and it is positive. So it is sagging bending moment. It is 20. There is same UDL throughout. There is no other load acting. अगर कोई बीच में दूसरा लोड रहता तो फिर हमको उसका भी इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता. But the equation will be same up to joint D. Now if you will take the bending moment at D, how much will the bending moment at D? हमको कितना पुट करना पड़ेगा? x का वैल्यू. Put x is equal to 4 in that case. So this will be 4 plus 20 minus 1.45 into 4 square. So it is 24 minus 1.5 to 16. 16 का 1.5 करेंगे तो 24 ही आएगा. Minus 24 is equal to 0. इसका मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है. Right? So it is 20 here. The bending moment is 0. How the variation must be? The variation, because it is UDL. You see here the bending moment varies with the square of x. So the variation is parabolic. So this is how the variation will be. And it will be maximum below this point. Where the shear force is 0, the bending moment is maximum. It is 20 at C, it is 0 at D, and it will be maximum below this point. Already A, B, C, D, E points are. Let I call this point as F. So the bending shear force is 0 at point F. So at point F, the bending moment must be maximum. So how will I get maximum bending moment?
That must be at F. That is where x is equal to 1 by 3. So put here in the equation. The bending moment at F will be equal to 1 by 3 plus 20 minus 1.5 into 1 by 3 square is minus 1 by 9. So you solve this. अगर ये गया तो ये हो गया 0.15 छक्के. So it is 2 by 6 plus 120 by 6 minus 1 by 6. So it is 121 divided by 6. तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12. डेसिमल लिया तो 6 1 6 6 6 चलते रहेगा ऐसे ही बार किलो न्यूटन मीटर एंड पॉजिटिव. So it must be sagging bending moment. It is 21.67 kilonewton meter. This is positive bending moment. This is the bending moment diagram for CD. अभी मुझे स्केच करना है DE के लिए. यहाँ स्पेस नहीं है, so I will sketch the three diagrams here. Axial force. अच्छा, what is value of VD? VD is 11. What is HD? 0. What is MD? 0. So the axial force diagram will be 11, 11. It is compressive. So this is this. Now compressive I will write 11, 11. What is next? There is no shear force diagram. This is axial force diagram. कोई shear force ही नहीं है यहाँ पर. There is no shear force diagram. यहाँ पर पूरे सिस्टम में कोई मोमेंट ही नहीं है. So there is no bending moment diagram. That's all. So this is how we can sketch the axial force diagrams 1, 2 and 3, shear force diagrams 1, 2 and 3, the bending moment diagram 1, 2 and 3 because there are three members. Axial force, shear force, bending moment, axial force, shear force and bending moment, axial force, shear force and bending moment. Where the shear force is 0, the bending moment is maximum. Okay? So this is how we can do. So I am concluding lecture here. There are 2-3 more problems that we will do in the next class. Next Wednesday को 26 जनवरी रहेगा. तो अगर छुट्टी भी रहेगा तो I will take the lecture. Okay? I will take lecture. अगर 26 January is a holiday, if it will be declared by the college, then also I will take the lecture. क्योंकि हमको ये सब syllabus complete करना है by the end of January. So in one more lecture I will finish this, and in the same lecture I will start another topic. क्योंकि अभी हमको सिर्फ 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है. That will take not more than 1 hour. अगर आज का हमारा आधा घंटा लॉस नहीं हुआ होता तो हम और करके आगे निकल गए होते. So in the next lecture I will start another topic, or otherwise I will request Professor Madam Atiya Banu to complete that task. Okay? Thank you. Sir, what is this? You can't say that.